वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हाट इज अ स्लम सेल एंड व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ स्लम सेल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो स्लम सेल क्या होती है, स्लम सेल का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और स्लम सेल को हम डिटेल में यहाँ पर कवर भी करेंगे कि जानेंगे कि स्लम सेल बेसिकली स्लम सेल में होता क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट में किस किस तरीके से एग्जाम्पशन भी मिलती है स्लम सेल के अंदर, वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन जो है डिफाइन करता है स्लम सेल को, सेक्शन 242 सबसेक्शन सी ऑफ द स्लम सेल। स्लम सेल मीन ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट बिजनेस अंडरटेकिंग एंड पार्ट ऑफ इट एंड कंसिडर्ड एज गोइंग कंसर्न and for it lump sum consideration. So transfer of business undertaking, it refers to sale of business entity that is operational functional that surrounds over its assets and liabilities and goodwill. Going concern, this implies that transfer undertaking has a potential to continue its operation without any significant disruption. Lump sum consideration, the sale consideration is single and fixed amount and not a sum derived by assigning the individual values. Tax treatment of slum cell section of Income Tax Act. Capital gain tax. The transfer of undertakings through slum sale is considered as disposal of capital assets. इसमें आपकी जो कैपिटल असेट्स है उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर अराइज होता है बिटवीन द सेल कंसिडरेशन एंड द indexed cost of undertaking. It's important to note that indexation benefits which adjust the cost of assets for inflation which are not available for slum cells. If slum sale consideration is start through the issuance of shares by the buyer company. Section 50B deals with the manner of how to calculate the consideration. It dictates the calculation of capital gain arising from such a transaction. अब then calculating capital gain on slum sale. How to capital gain on slum sale? So determine the sale consideration. First of all, the total amount received from the undertaking. Ascertain the cost of undertaking that includes the historical cost of acquisition, ठीक है, and capital expenditure incurred during the ownership. Indexation benefit capital gain calculation. Calculation formula, this is sale consideration section 50B and less the indexation cost. So I hope this video will helpful for understanding about the slum cell and how to calculate the tax on the slum cell and how to tax plan the on the slum cell. The accurate valuation, while individual valuation is not mandatory, a fair assessment of the undertaking, it helps negotiate a good sale price and minimum capital gain. Tax planning, consulting a tax advisor is essential to understand the potential tax implication of both seller and buyer. So I hope this video is very helpful for understanding about the concept of slum cell. If you have any query related to the slum cell, you can also contact another number given on the screen. Thank you very much for watching this video.